died and several others who were reportedly injured during clashes between two groups in a village in UP's Bahraich, where over the playing of music during the immersion of Durga idol procession. After this incident, tensions gripped in the area as people set several vehicles on fire, prompting police action to bring the situation under control. Clashes also erupted and stones that were pelted and gunshots that were fired at the procession as it was passing through Bahraich Maharajganj Bazaar area. We have a ground report from my colleague Vinod Mishra, bringing you more exactly what had happened as far as the sequence of events are concerned. बहराइच के हरदी इलाके में रविवार की शाम तकरीबन 6 बजे ठीक इसी जगह पर मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। ये वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने इस घर पर तोड़फोड़ की है। ये पूरा जो क्राइम सीन है इसको कवर किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी घर में जो है खींचकर रामगोपाल मिश्रा को ले जाया गया, उनके ऊपर फायरिंग हुई। यहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप थी, ये देखिए उनके जो तिजोरी है वो बाहर रखी है, तोड़फोड़ यहाँ पे हुई है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं आगजनी की तस्वीरें हैं, कुछ चीजें जो है वो जलाई गई हैं यहाँ पर। और आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं जो बोटल्स रखे हैं जिनके जरिए जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे उन पर जो हमले हुए वो पत्थर से हुए। और इस तरह की जो कांच की बोतलें हैं कैरेट्स में रखी हुई थी, ये देखिए छतों पे कैसे कैरेट्स रखी हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं कैरेट्स में बोतलें रखी गई थी और इनसे ही फायर जो है उन पर हमला हुआ। तो क्या ये कोई प्री प्लान्ड था, पहले से प्लानिंग थी? देखिए यहाँ पे ये भगवा झंडे लगे हुए हैं और इस्लामिक झंडे हैं। कहा जा रहा है कि भगवा झंडों पर इस्लामिक झंडे लगाए गए, उसके बाद ही ये विवाद चुकी हुआ। एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाने के लिए वापस लेके आते हैं। ये वो सड़क है, इसी रास्ते से जो है जो मूर्ति विसर्जन के लिए वैन थी, गाड़ी थी जिस पर मूर्ति रखी हुई थी वो जा रही थी। Well, in the meantime, let's get you the update of the statement that is coming in from UP Chief Minister Yogi Adityanath, also taking note of the incident and saying the guilty will not be spared. In a post on X, he has said that those who spoil law and order in situation in Bahraich will not be spared. Let's in the meantime also talk about this incident that has now come across as tensions that has been soaring in the area, where clashes that has been reported leaving one person dead. We have Pratibha with us right now. Pratibha, what is the statement coming from the Chief Minister? Big statement from the Uttar Pradesh Chief Minister assuring strict action in the case. Here's what he says. He tweeted in Hindi. He says, जनपद बहराइच में महसी में मोहल्ले बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. They will not be spared. He goes on to say those who spoil the atmosphere in Mahsi or Bahraich district will not be spared. Safety is guaranteed to all, but instructions have been given to identify the rioters and those whose negligence led to the incident and take strict action against them. Immersion of idols will continue. Administration and police officials have been directed to be present on the spot and communicate with religious organizations to ensure that the immersion of idols is done on time. So that's a statement coming in from the Uttar Pradesh Chief Minister. All right, Pratibha, thank you very much. Well, that's the statement coming in from the Chief Minister. Let's get an update from Adib, who is joining us on ground. As far as the action that has now been initiated over these clashes being reported, Adib, give us an update. Well, see, Amita, violence erupted in Bahraich after a person was killed and several others were injured in a communal clash in Bahraich. This was a Mahsi area where a man was killed during the Durga idol immersion. Chief Minister Yogi Adityanath has taken note of the incident and he has instructed the police and the administration department to take strict action against those who are involved in this anarchy and in violence that has taken place in Bahraich. And he has also said that the administration should talk to the religious leaders and Durga idol immersion should continue. Meanwhile, additional police forces have been deployed in Bahraich area. Currently, the people, the victim family, they are protesting in Bahraich, demanding justice for the person who has lost his life in the clash that has broken out in Bahraich. Chief Minister Yogi Adityanath is closely monitoring the situation. विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाया और इसका खामियाजा ये हुआ कि एक बार फिर से जो है आगजनी घटनाएं हुई। ये देखिए किस तरीके से शोरूम से जो है काले धुएं का गुबार निकल रहा है। और दूसरी तरफ एक बार दिखाएं तस्वीरें फोर्सेस की, किस तरीके से डीएम, एसएसपी और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं। तो अब चूंकि जिस भीड़ उग्र हो गई, तमाम जो प्रतिष्ठान थे, हॉस्पिटल्स थे, शोरूम्स थे, उनको आग के हवाले कर दिया गया।
उसके बाद अब प्रशासन एक बार फिर मौके पहुंचा है और ये वही एरिया, आपको बता दें कि इसी इलाके में कल जो है वो घटना हुई थी। तो एक बार आपको फिर जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि ये महाराजगंज का इलाका है और यहाँ से महज 200 मीटर दूर कल मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग जहाँ हुई थी और आज उसी से करीब 100 से 200 मीटर दूर जो है ये देखिए किस तरह से सड़कों पर आगजनी की गई है, तमाम घरों के सामानों को बाहर लाकर जलाया गया है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह के हालात इस वक्त जो है बहराइच में बने हुए हैं। आपको एक जहां भी नजर जाएगी सिर्फ धुएं के गुबार दिखाई देंगे, आग की लपटें दिखाई देंगी और ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि यहाँ का माहौल किस तरीके से खराब हो चुका है। प्रशासन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से फेल हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं थी, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं थे। जब सुबह में यहाँ पहुंचे थे तब हमें यहाँ कोई फोर्स नहीं दिखाई दी थी और इसका नतीजा यही हुआ कि यहाँ पर पब्लिक बड़ी संख्या में पहुंची और उन्होंने पूरे इलाके को, तमाम जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनको जो है अंदर जो है आग के हवाले कर दिया। और ये देखिए कैसे जो है तमाम जो गाड़ियां हैं वो आग के हवाले हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं वो जल रही हैं और तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि किस तरह की कितनी भयावह जो है आग है। ये तस्वीरें थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं कि किस तरीके से तमाम प्रतिष्ठान जो है उनको जलाया जा रहा है इस वक्त और आग के हवाले किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि पब्लिक भी बड़ी संख्या में अभी भी हाथी में लाठी डंडे लेकर जो है वो खड़ी है। तो ये चीजें परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बेहद परेशान कर ये सब क्या हो रहा है? ये अनूप शुक्ला जी की है, इसको फूंका गया है। अभी हम लोग तो अभी उधर से आए हैं यहाँ। ये कौन लोग हैं जो आग लगा रहे हैं? ये मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने कल गोली चलाया है, मारा है। वही लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल गोली चलाई, आज फायरिंग कर रहे हैं। यही लोग जो आग लगा रहे हैं। हाँ, ये सब वही हैं। हाँ। ये आप देखिए, वो उधर देखिए कृष्णा एंड कंपनी लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है। हाँ। और यहाँ पर अब इनकी ये जो बस्ती है इसके तार बड़े बड़े अपराधों से जुड़े हुए हैं। यहाँ के आधे से ज्यादा लोग नेपाल रहते हैं, क्राइम करते हैं, वहाँ खुद ही कौन लोग हैं जलाते रहे? ये एजेंसी वालों ने खुद अपना, एजेंसी वालों ने नहीं जलाया है। ये अनूप शुक्ला की एजेंसी है, वो सिकंदरपुर के रहने वाले हैं। इसको उन लोगों ने आग लगा दिया है। जिन्होंने कल पथराव किया था उन्होंने आज आग लगा दी। यहाँ पर मुस्लिम स्टाफ काम करता है, इसलिए वो आग लगा के निकल गए ताकि उनका दोष न हो। तो ये देखिए लोग कह रहे हैं कि कल जिन्होंने पथराव किया था आज उन्होंने ही इस पूरे इलाके को आग के हवाले किया है और तमाम जो लोग हैं अब सड़कों पर हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंची हुई है। हालांकि उसके बावजूद जिस तरह की घटना यहाँ पे हुई है वो बेहद परेशान करने वाली कह सकते हैं आप, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से एक बार फिर दोबारा आगजनी होगी। Well, that's the live update coming to you from the ground there as the locals there or the people there are talking about when it comes to this violence that broke out. Of course, the first ground update that is now coming to you from Times Now's reporters, the team there on ground, and a very stern message directly coming in from the Chief Minister himself, saying that anyone who is trying to disrupt peace in the area, they will not be spared. And however, saying as the Chief Minister has issued directions to the police to identify the rioters and saying that the negligent officials too will face the brunt as far as the Chief Minister's direction is concerned, saying that strict action will be taken. As far as pictures that are now coming in of the first-hand update of the tensions that has been reported in UP's Bahraich, this happened during the Durga idol immersion when it comes to the procession that was being taken out, and clashes that were reported resulting in one individual who has lost his life is a 22-year-old man. However, over this we are looking at clashes that were reported. The police had a hard time controlling when it comes to the situation there, as there were reports of stone pelting, there were reports also vehicles being set on fire. But the altercation, however, on ground that continues, even as the police is trying to control the situation. There are strict directions, and that has now come on part of the Chief Minister himself, who is asking the officials to take action on ground and saying that such incidents cannot be repeated in Uttar Pradesh. This is from Bahraich, where we are getting you these live updates from on the
angles as far as the precautionary measures that have been taken by the police, but you can see the locals there who are up in arms, who are out on the streets again as they have been continuing with the protest. There has been a lot of blame game that has been happening, but right now the situation is tense, and directions that has been given by the Chief Minister himself to bring the situation under control. One person, a 22-year-old man, has lost his life in the violence and the clashes that were reported. The locals have hit the streets. They have been holding protests. The Chief Minister there vowing strict action, and of course we get you the updates on part of the opposition as well, who time and again, as far as this incident is also concerned, has taken up this opportunity to question UP's law and order. As Times Now is on ground zero getting you those updates and the pictures, they're speaking to the locals also on what could be the reason behind these clashes that has been reported. However, one person, we are told, has died, and when it comes to the clashes that were reported during the Durga idol immersion, the procession that was being taken out. Let's get you the reactions on part of the opposition as well over these clashes that were reported in UP's Bahraich. The Samajwadi Party is taking a jibe at the UP government. नौजवान का इस घटना में जो है हत्या हुई है, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ शासन प्रशासन के जो लोग जो जिम्मेदार थे, जिनकी नाकामी है, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। दूसरा, किसी निर्दोष को, चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह से उसको परेशान करने का काम, फंसाने का काम उत्तर प्रदेश में ये होना नहीं चाहिए। Let's in the meantime get you the details of the FIR also that has now been registered in this case of Bahraich violence. At least 10 people who have been booked in this FIR that has now been registered on part of the police there, and what is now being said, around 30 people have also been taken into custody. Let me go across to Adip once again. Adip, FIR details please. Well, definitely, Amita, see, named person has been booked in this FIR, and apart from him, 30 unnamed person have been booked. The police team are now looking for the accused who started the violence. Currently, the first priority of the police, the district police, is to maintain law and order and to bring stability in the district. Currently, there are several incidents of violence that have been reported from the Bahraich district. The fresh case of arson has also been reported in the Bahraich itself. So the first priority of the police is to maintain the law and order, and then to identify and arrest the culprits who started the violence at the first hand, and to check that what really happened and what transpired the violence in Bahraich. All right, with the FIR that has also now been registered on part of the police, they are already initiating action against the accused who are said to be the one who are behind this clashes that was reported in UP's Bahraich. Adip, keep us updated on the details. You're watching Times Now. Back after